Hello and welcome to the Nifty analysis and the Bank Nifty analysis ahead of the expiry. So, when you are looking at the markets and when you're trying to find out what the market has really done over this entire July series, it's been quite troubling, right? And that's what we observed ahead of the expiry on a very dull Wednesday after a very turbulent and very vibrant Tuesday. So, what happened on Tuesday was market ने एक अच्छा उछाल दिखाया and right from the support levels which we have been discussing as part of our weekly updates, and also when I come out with various kind of reports on tell our new trader subscribers on how exactly you can find that out. So in case you have not seen that, I should ensure that you join and subscribe to our YouTube channel so that you stay notified about all such interesting videos. एंड ऑल्सो आपको पता चले कि हमारे कम्युनिटी में क्या हो रहा है, उसके लिए आप हमारे कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं where we come out with various kind of updates. So now when I take you inside the market and when we see what the market has really done. So first of all, when you take a look at the Nifty charts ahead of the expiry, you can see here that यहाँ पर जो है it has been testing this support zones around the 24,500 mark, and almost about there the Bank Nifty hit the support zones around that zone, और वहां पे it made a nice long body bullish candle, right? If you had seen in the earlier videos, I had pointed out towards the time cycle approaching, and this time cycle has clearly identified that there is a reversal possibility emerging here. And now when you take a look at the option data also, they are also pointing out at some resistance zones जहां पर call rating हो रहा है on the 25,000 to 25,100 zone. So that area is going to be the max pain point, and जहां पर एक resistance आ सकता है. और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कैंडल स्टिक पैटर्न के तौर पे यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग बना है, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना है, और यहाँ से वी आर सीइंग अहेड ऑफ द एक्सपायरी सम बिट ऑफ ऑप्टिमिज्म. ओके, सम बिट ऑफ ऑप्टिमिज्म. क्यों? क्योंकि मार्केट्स वेर एबल टू होल्ड ऑन. कि कई बार हमने देखा कि मार्केट्स वेर अनेबल टू होल्ड ऑन टू द रिकवरी. सो नाउ द क्वेश्चन इज वेदर कैन इट होल्ड ऑन टू द रिकवरी. उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, एंड वी विल टेक द हेल्प ऑफ न्यू ट्रेडर टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली वी शुड बी डूइंग. सो एज वी सॉ द डे वाज स्पेंट इन आइडिएटिंग कि कौन सा सेक्टर और चलेगा और कहां तक चलेगा, बट नन ऑफ द सेक्टर्स रियली मूव्ड एनीवेयर. एंड व्हेन आई टेक अ लुक एट न्यू ट्रेडर, आई फाउंड आउट दैट यहां से मुझे कोई सेक्टर की एक ग्रिप नहीं मिल रहा था. एंड यस, फार्मा सेक्टर विच वाज मूविंग over the last 3-4 days, they also came to a standstill, you can say, in the trading session. So now when you take a look at the market scenario, यहाँ पर भी थोड़ी bearishness दिखाई दे रही थी. As usual, the trend is definitely in much more under the grips of the bearish side. तो उसकी वजह से यहाँ पर जो बिकवाली दबाव है, that is still continuing to hold on. बट लेकिन अगर आप चलेंगे और देखेंगे कि मार्केट का जो मूवमेंट कैसे रहा, सो नाउ व्हाट आई थॉट वाज, लेट मी गो इनटू द फिबोनाची पिवट्स, ऑलराइट, एंड दिस इज माय फिबोनाची पिवट पेज. एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल सी कि इंडाइसेस जो है, okay, where and how did they finish. So now when I take a look at the indices, I can see here कि indices अगर मूवमेंट देना है, so normally जब भी pivots का आप इस्तेमाल करते हैं, so these are the basic criterias of any action. So if a price is intending to show some movement, it has to cross R1 on the upside अगर bullish होना हो. अगर bearish मूव दिखाना हो तो it has to cross S1 on the downside. तो यहाँ पर क्या हुआ है कि Nifty as well as Bank Nifty, they have not been able to cross R1 through the day, and they have been basically stuck at this zone. So this clearly indicates that yes, there is a bullish possibility. pivots के ऊपर जरूर है. तो एक बात आप समझ कर चलिए कि जो pivot है काफी पावरफुल चीज है, और pivot से आप काफी इन्फ्लुएंसेस निकाल सकते हैं. तो ये जब pivot के ऊपर चलने लगा, तो इसमें क्लियर इंडिकेशन है कि देयर इज अ पोटेंशियल टू गो अप एंड देयर इज अ इंटेंशन. ओके, नाउ फर्स्ट पोटेंशियल कम्स एंड देन पोटेंशियल इज डिस्प्लेड थ्रू इंटेंशन. तो ये इंटेंशन अब दोनों ये दिखा रहे हैं, तो ये दिखा रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ी ताकत लगेगी. एंड फॉर दैट I will get into the momentum indicators. So now when I take a look at the momentum indicators, all right, so what I am seeing here on the Nifty, so if I go down to the Nifty, all right, I can see here that Nifty
राइट नाउ ऑन द इंट्राडे टाइम फ्रेम। सो मैंने आपसे हमेशा डिस्कस किया है कि एडीएक्स और डीआई काफी पावरफुल चीज है जो मैं इस्तेमाल करता हूं टू फाइंड आउट कि ओवरऑल डायरेक्शन कहाँ बन रहा है और उसमें क्या मुझे कोई स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डायरेक्शन बन रहा है ऑन द पॉजिटिव साइड, यू कैन सी हियर ऑन द 60 मिनट, ओके, यू कैन सी हियर ऑन द निफ्टी इन द 60 मिनट अहेड ऑफ द एक्सपायरी। तो यहाँ पर पीडीआई इज गॉन टू 23.5, सो विच इज अ गुड साइन। ओके, एमडीआई भी वहां पर है, सो मतलब अभी इवन स्टीवंस बोल सकते हैं यहाँ पर थोड़ा एक टग ऑफ वॉर जैसा चल रहा है ऑन द 60 मिनट्स। नाउ व्हेन आई सी हियर ऑन द 30 मिनट्स, यहाँ पर एडीएक्स भी 25 के ऊपर आ गया है, यहाँ पर 30 मिनट्स में भी एक 24.7। तो यहाँ पर इंट्राडे पे एक एडीएक्स मजबूती दिखाए हुए नजर आ रहा है, सो विच इज अ गुड साइन फॉर अ रिबाउंड। ऑलराइट, सो ऊपर के लेवल मैंने आपसे तो डिस्कस कर ही लिए, तो यहाँ पर हम और भी डिटेल में लेवल्स के बारे में बात करेंगे, बट लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो है द पीडीआई इज ऑल्सो मच अबाउ द एमडीआई। सो यहाँ पर 30 मिनट्स पे एक इंप्रूवमेंट है और 60 मिनट्स में एक देयर इज गुड चांसेस ऑफ सम इंप्रूवमेंट फर्दर। सो ओवरऑल ऑन द 60 मिनट्स एंड 30 मिनट्स, अगर आप एक इंट्राडे प्लेयर है इंडेक्स में, देन टुमारो कुड बी एन एक्साइटिंग डे ऑन द एक्सपायरी। सो नाउ व्हेन आई टेक अ लुक एट द हायर टाइम फ्रेम्स, व्हाट आई सी हियर इज दैट यहाँ पर अभी भी एक द बेरिश ग्रिप इज वेरी मच देयर, एंड ऑन द वीकली चार्ट्स में तो बेरिशनेस उतना जोर पकड़ा नहीं है, सो वी हैव नॉट गॉन देयर। बट देन व्हेन आई टेक अ लुक हियर, द पीडीआई और एमडीआई के बीच जो वॉर है ऑन द डेली, इट इज क्लियरली इन द साइन ऑफ द ग्रिप। सो यस, फॉर अस फॉर टुमारो वी हैव टू लुक एट डेली 60 एंड 30, और उसमें से 60 एंड 30 आर फेवरिंग अ कंटिन्यूड पॉसिबिलिटी ऑफ एन अपसाइड। सो ये मानकर चलना है हमें कल के सेशन में। And when you go with this kind of outlook, and when you are looking at the overall market scenario where the lows are getting held, and you are finding that the momentum is shifting slowly to the upside, so let's go and take a look at some levels, और levels देखने के लिए हम लोग चलेंगे into stock analyzer। all right, so stock analyzer में क्या level बनते हुए नजर आ रहा है, so let's go and take a look at stock analyzer। और यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि still now the Nifty is trading below the weekly pivot। so अगर एक रैली आए भी, okay, so this is a Nifty spot like we always discuss। so यहाँ पर जो Nifty spot है, so उसका immediate resistance zone होगा closer to the region of around 24,960। अगर 24,960 के ऊपर चला, then I would target H4 which is around the 2570 mark। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे हमारे पास कल को ट्रैक करने के लिए, और एक्सपायरी के दिन ये दो लेवल्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर ही थोड़ी कॉल राइटिंग आ रही है, विच इज ऑल्सो द मैक्सिमम पेन पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अगर कल के सेशन में जा रहे हैं, ये दो अपसाइड आप पकड़ कर चलिए, एंड ऑन द डाउन साइड आई वुड वेट फॉर 24,700 टू गिव अवे। so 24,700 on the downside, and 24,960 and 25,070। so these will be two levels on the upside that you can watch out for। so with this you will be able to action your Nifty trading for tomorrow। all right, so now निफ्टी को हम बैंक निफ्टी के बिना छोड़ नहीं सकते, so let's go and take a look at what bank nifty has done। so when you first take a look at the charts में मुझे क्या नजर आ रहा है, मैंने इचिमोकू का जरा इस्तेमाल किया। ये इचिमोकू है, एक अच्छा इंडिकेटर है जो मुझे बताता है कि एट अ ग्लांस व्हाट इज द ओवरऑल सिनेरियो। ओके, सो इचिमोकू में एक नुआंस है, ये जो हरा लाइन है उसको सीएस लाइन कहते हैं, और जब ये सीएस लाइन प्राइस के भीतर चले जाता है, लाइक यू कैन सी हियर इट हैज डन नाउ, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द इंडेक्स टू रेंज। तो अगर आप एक इंडेक्स ट्रेडर हैं और आप स्पेशली यू टारगेट द एक्सपायरी डे, सो नाउ यू कैन सी हियर कल मंथली एक्सपायरी है, तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सिचुएशन जो है, ओके, ये जो सिचुएशन है, इट कुड लीड टू अ range bound scenario in bank nifty। so I feel that the bank nifty is in a range bound scenario। यहाँ पर थोड़ी ranging होगी and this could last for a couple of sessions। so if you are looking at the banking space per se,
कि यहाँ से आपको कोई ट्रेंडेड एक्शन मिलने वाला है, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप जब मोमेंटम इंडिकेटर भी आप गौर करेंगे तो वो भी इट इज जस्ट ट्राइंग टू establish some dominance. So right now momentum is also not favoring too much of a decline, and with the Ichimoku suggesting कि यहाँ पर एक range bound action हो सकता है, so I will wait and watch. So if we are going to enter into a range bound situation, so what are the levels which I can watch out for? Maybe I can do some strategy for the expiry tomorrow. So let's go and take a look at the strategy कि क्या levels हो सकते हैं. So whenever I get into the market, all right, so there are two levels which I watch out for if I have to generate some kind of a strategy. So with the index trading at 56,100, so it is very clear that yes, it is below the pivot. Both the indices are below the pivot. So now where would we target our upper end of our strategy? So your upper end of the strategy will be closer towards H3. तो H3 जो है आपका अपर एंड होगा आपका स्ट्रेटेजी का, और आपका लोअर एंड होगा एट अराउंड 56,000. सो 56,000 से लेके 56,800 ये आपका एक स्प्रेड बन जाता है वेयर यू कैन एग्जीक्यूट योर स्ट्रेटेजी. अगर आपको स्ट्रैंगल करना है स्ट्रैंगल कर सकते हैं, या अगर आपको और कोई स्ट्रेटेजी बिठाना है बिठा सकते हैं, बट देन ये आपका डिमांड जोन होगा क्लोजर टुवर्ड्स 56,000 और आपका सप्लाई जोन होगा closer towards 56,700 to 800. So these two will be the legs which you can consider for your strategy. All right. So with that, I come to an end of today's discussion ahead of the expiry on both the indices. I hope you got some perspective on how to balance your trades and how to participate in tomorrow's trading session. And with this, I want you to ensure that you are able to use this concept, use this analysis in your trading style, and also share with us as to how you have gone about your trading. So you can comment on this video and tell us how you have gone about executing it. And if you like what we discussed, do share this video with as many expiry date traders as possible so that they also get some perspective ahead of the expiry. Until I catch you again in the next video, thank you for watching, and I'll connect with you in the next one.